Welcome back to my channel DA Academy, and this is Dheeraj Arora, and we are going to start our new topic, which is acceleration. Acceleration of an object is the rate of change of velocity with time. That means acceleration A, acceleration जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, it is A, small a, velocity change or change in velocity भी लिख सकते हो आप upon time taken. And the negative acceleration is called retardation or deceleration. It is retardation or deceleration. जब acceleration negative होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? retardation. Next, it is a vector quantity. Vector quantity means जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट विल बिकम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आगे हम चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी changes with equal amounts in equal interval of time, तो वो क्या हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और वेरिएबल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होगा जिसमें यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in equal interval of time. So this will be your variable acceleration. Next we move on to average acceleration, which is your average acceleration. Defined as change in velocity of a body by total time taken. So mathematically it could be written acceleration is equal to change in velocity upon change in time. So which is equal to dv upon dt. Now your next topic is freely falling body. जैसे कि मेरे को नाम नहीं बताता है कि बॉडी जो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है उस बॉडी को हम बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी. इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अलोंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये मार्कर मेरे हाथ है और मैं इसको नीचे गिरता हूँ, और नीचे गिरता हूँ तो क्या हो रहा है, ये नीचे गिरने से ये मार्कर जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ, नीचे गिरा. तो ये वाली जो बॉडी कहलाएगी, बॉडी कौन है इस टाइम, मेरे हाथ में जो मार्कर है जिसको मैंने नीचे गिरा. सो ये वाली जो बॉडी होगी ये मेरी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. इस टाइम पे हम फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देंगे. Relative velocity of an object A with respect to another object B is the time rate at which the object A changes its position. For example, मेरे पास object से A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, right? इस with respect to B ये क्या कर रहा है, B जो है सपोज इस जगह पे आ गया with respect to A. So B is changing its position from B1 to say B2.
इस तरह की जो वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे हम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज द टाइम रेट एट विच द ऑब्जेक्ट ए चेंजेस इट्स पोजीशन. Now we are going to do derivations of equation of uniformly accelerated motion by calculus method. Here we are going to do derivations of equation of motion which we have done in 9th class also. अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आप लोगों ने 3 इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं. एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड इक्वेशन वाज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as. ये वाली तीनों इक्वेशंस आपने 9th क्लास में बाय ग्राफिकल मेथड करी हुई हैं. अब हम करेंगे इनको बाय कैलकुलस मेथड से. लेट अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration से let u is equal to initial velocity at time t equal to 0 and v equal to final velocity, here it is v equal to final velocity after time t. So velocity time relation we are going to introduce here, which is v is equal to u plus at, that is called velocity time relation. Let at any instant of time t dv be change in velocity in time interval dt dv. Now we have acceleration which is equal to change in velocity upon change in time. What is the velocity? Change in velocity here, that is dv, and what is the change in time? That is dt, implies dv will be equal to a dt. So I got this expression. Yes, now integrating this, or you can give it number 1 also, integrating both side, so it will become dv को इंटीग्रेट करेंगे. v क्या है यहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मेरी? u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी? v. सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलरेशन a dt. सो इनिशियली मेरा टाइम क्या था? 0, और v जब वेलोसिटी हुई तो टाइम कितना हो गया? t. सो इंटीग्रेटिंग हेयर, सो आपको एक इंटीग्रेशन बता दूं. अगर मेरे पास dx है 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x के बराबर. सो यहाँ पे dv मीन्स 1 dv. सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और जो ये लिमिट्स हैं ये इस तरफ आ जाती हैं आपकी. सिमिलरली एक्सेलरेशन के साथ t नहीं है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, और इसके लिमिट हो जाएंगे 0 to t. उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ये अपर लिमिट है, और v इज दी अपर लिमिट एंड u इज दी लोअर लिमिट. सो इट विल बी टेकन एज, जहाँ पे v है अपर लिमिट पुट कर देंगे, इट विल बी v माइनस लोअर लिमिट, दिस विल बी u, एंड दिस विल बी इक्वल टू a इंटू अपर लिमिट इज t and then lower limit is 0. So this comes out to be v minus u is equal to 80, or v is equal to u plus 80. So this is the desired result.
Yes, our next relation is distance time relation. Distance time relation is S is equal to ut plus half at square. This is my distance time relation. Here, consider an object moving in a straight line with uniform acceleration, say that is a. Let dx equal to the displacement of the object in time interval dt. Therefore, velocity v will be equal to dx upon dt, or dx is equal to v dt by cross multiplying here. Now we have the formula for v also, the previous formula which we have used, we are going to use it here. v equal to u plus at into dt. अब मान लेते हैं let x naught and x are the displacements at time t equal to 0 and t equal to t respectively. We have already dx is equal to u plus at dt. We have this relation already. Give it relation number 1. So integrating this equation, integrating equation 1, so it will become dx integral. Similarly, this will become u dt integral plus at dt integral. Here dx is the displacement, and this is we have taken as x naught to x. This will be 0 to t. This will also be 0 to t. So its integration will become x naught to x equal to u will come out, and integration of dt will be t. Here it will be 0 to t, then plus a will come out, t, and then integration of dt. Here t dt. If I talk about integration x dx integration, its integration will be x square by 2. Its integration will be x square by 2. So here I have t dt. So its integration will become t square upon 2. 0 to t is my limit. So next we move on to, it will become here x minus x naught, x minus x naught equal to u as it is. यहाँ पे ये मेरा अपर लिमिट, ये मेरा लोअर लिमिट. इट विल बिकम t माइनस 0 प्लस a. अंदर मेरे पास रहेगा, ये 2 भी बाहर निकाल लेते हैं. सो इट विल बिकम t स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर. x minus x naught we take it as s, because this is the displacement, change in displacement. So this will be ut plus this will be 1 by 2. A also I have, this is your t square. So this is the derived formula by calculus method, this which is the second equation of motion.
Now my third equation is v square minus u square equal to 2as. So इसके लिए मेरे को पता है, we know acceleration is equal to dv upon dt, or we can also write it as dv upon dt into dx upon dx, or it could also be written as dv upon dx into dx upon dt, and dx upon dt is v, dx upon dt is v. So here is a. What I do is, by cross multiplying, it will become a dx equal to v dv. Similarly, now I am going to integrating both sides. Integrating both sides, I will be getting a dx, limit will become x naught to x equal to v dv, and then limit will become, here is dv, v is the velocity, so it will be initial velocity is u and final velocity is v. So I have to integrate dx only, so a will come out. So a integration of dx is x, so it will become x, limit, lower limit, and then upper limit. This will be, now here I have v dv, again it will become v square by 2, and then integration, this is lower and this is upper limit. So in this way we have to do. So this will become a upper limit minus lower limit is equal to 1 by 2. I take it out. Here it will become v square minus u square. So in place of this thing, I will take s. So this is a, and this will also come here. 2as will be equal to v square minus u square, which is the desired result of third equation.